ब्रेक हो गया था, इस वजह से हमें दोबारा लाइव करना पड़ा। खैर, हम डिस्कस कर रहे थे पेपर नीट 2026, जो कि मैंने पहले ही कहा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग पेपर आया था। मैं केक वॉक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके रीच में थे और बहुत अच्छे थे। नाउ एक क्वेश्चन जो है जो मेरी नज़र से इस वक्त गुजर रहा है, जो इस वक्त मेरे पास पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन था, सीधा सीधा आया था रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसेस के बारे में। और जहाँ तक मुझे याद है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसेस के बारे में जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ढूंढना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, यहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हो, आप देख लेते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जल्दी जल्दी में हो गया और उसके बाद आपने करेक्ट वाले को ऑप्शन टिक किया, जबकि यहाँ पर आपको ढूंढना था गलत कौन सा है। दे आर मॉलिक्यूलर सिजर्स, इसमें कोई शक नहीं है, ए इज करेक्ट। They are the enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophages in E. coli, क्योंकि आपको मालूम है कि इनके डिस्कवर होने की ही दलील ये है। डिस्कवर कैसे हो गए थे, पता चला था ई कोलाई बैक्टीरिया में, या बैक्टीरिया में यूजुअली क्या होता है कि एक डबल सिस्टम होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है, जिसमें आप मिथाइलेज देखते हो, रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस देखते हो। वहीं से तो ये डिस्कवर होके आए थे और वहाँ इनका काम क्या था, बैक्टीरियोफेज को रुकाना, उसका जो है फॉर एग्जांपल उनके डीएनए रेप्लिकेशन को रोक लेना। ओके, सो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा, दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दैट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर में नहीं काटा जाएगा। जैसे आपने देखा कई सारे एंडोन्यूक्लियसेस ऐसे होते थे जो सेंटर में नहीं काटते थे पैलिंड्रोम को, कहीं और काटते थे अदर देन द सेंटर। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो सेंटर में काटते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। दे रिमूव द, सो सी गलत है फिलहाल हमारे पास। They remove the nucleotides only from the ends of DNA fragments, तब तो एंडोन्यूक्लियस हुए भी नहीं, वो तो एक्सोन्यूक्लियस हो गए। They recognize the specific palindromic base pair sequences, that is correct. ओके, इसका मतलब A करेक्ट है, B करेक्ट है और उसके अलावा C करेक्ट है, सॉरी C गलत था। दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड, डी सही है और जो जिसको बोलेंगे ई जो है वो गलत है। इसका मतलब आपके पास जो गलत स्टेटमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सी आपके पास गलत स्टेटमेंट है और उसके बाद आपके पास जो फॉर एग्जांपल डी है। ओके, सो सी एंड डी आपके पास गलत ऑप्शन है। यानी आपका कहने का मतलब है अगर आपने ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसके कहां पे काटता है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जब ये बोलता है ना एट द सेंटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन दिस साइट या पैलिंड्रोमिक साइट, तो इसका मतलब ये आपको कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन यहां पे कंफ्यूज होना नहीं है। उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा था पिछले स्ट्रीम में, जो स्ट्रीम अब हमारे बीच नहीं, यानी जो ब्रेक होगी, सॉरी, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 106 मेरे सामने है, जो शायद मैंने पिछले स्ट्रीम में बताया था, आई एम नॉट श्योर कि वो स्ट्रीम में वो क्वेश्चन आ गया था कि नहीं आ गया था, इसलिए मैं ये दोबारा पढ़ता हूं। एक क्वेश्चन था अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग, तो आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड्स। तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, तो ये गलत नहीं है। सीरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, गलत है। वैलिन इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड, सही है। लाइसिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, गलत है। इसका मतलब ए और सी जो है वो सही है, बाकी गलत है। ए और सी सही है, बाकी गलत है। उसके अलावा आप देखें बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें हाँ यस, एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आया था आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। कुछ नहीं पूछा गया था, मुझे अभी तक डर था, या पेपर जब तक आ गया तब तक डर था अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से फेज में या कौन से स्टेप में कौन सा टेम्परेचर चाहिए। ओके, हाई टेम्परेचर कहाँ कौन से स्टेज में चाहिए, लो टेम्परेचर कौन से स्टेज में चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ बेचारों ने पूछा नहीं। उन्होंने डायरेक्टली पूछा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोसेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसेस जो है उसका सीक्वेंस क्या है। डिनेचुरेशन करोगे पहले, फिर अनिलिंग, फिर एक्सटेंशन, या डिनेचुरेशन करोगे फिर एक्सटेंशन करोगे फिर अनिलिंग करोगे, या पहले एक्सटेंशन करोगे या पहले अनिलिंग करोगे। ऑब्वियसली हम पहले डिनेचुरेशन ही करेंगे, जिससे दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे अनिलिंग, देन अनिलिंग के बाद हम उसकी एक्सटेंशन कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कट टू कट क्वेश्चन, जिसमें कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन लाने की जरूरत इनको महसूस नहीं हुई। इन्होंने ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं डाला, हालांकि मुझे लगता था कि ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुझे एक ट्वीट भी भेजा था किसी स्टूडेंट ने जो एनटीए ने किया था, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि इस बार तो ट्विस्टेड पेपर आएगा, बट ट्विस्टेड नहीं था। ओके, नाउ उसके बाद आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन, विजुअलाइजेशन। ओके, द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सिजर्स।
ओके, अगर आपको याद होगा हम डीएनए के सेगमेंट्स को या डीएनए को कट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर से करते हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एन एगरोस जेल अपॉन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका मतलब ये भी तो गलत नहीं है, क्योंकि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही करते हैं हम सेगमेंट्स को अलग करने के लिए। उसके बाद द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग अंडर द अल्ट्रावायलेट, गलत। और उसके बाद सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हेन स्टैंडर्ड विद एथेरियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन ए विजिबल लाइट, वो भी गलत। इसका मतलब ए एंड बी सही है, बाकी गलत है। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे बाकी कुछ क्वेश्चंस को, जैसे हाँ यहां पे एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि यहां से भी बेसिक क्वेश्चन आया था। इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, सैक्रेड ग्रूव्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड सीड बैंक्स। इसमें आप इन सीटू में जो है सैक्रेड ग्रूव्स लाएंगे। नाउ लैक ओपेरॉन, आपको पता है लैक ओपेरॉन में 3 सेगमेंट्स होते हैं, लैक जी होता है, लैक वाई होता है और लैक ए होता है। उसमें से लैक जी जो है वो क्या रेगुलेट करता है या किसके लिए कोड करता है? ऑब्वियसली वो बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है। ओके, जबकि वाई जो है वो परमिएस के लिए कोड करता है और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। जो ऑप्शंस थे, मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूं, ट्रांस एसिटाइलेज पहला ऑप्शन है, दूसरा है लैक ओपेरॉन, रेप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन वो गलत है, और उसके बाद परमिएस है तीसरा ऑप्शन, चौथा है बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो जी जो है लैक जी वो बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने कर लेंगे इस वक्त, बिकॉज यहां पर जो है बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको देखने हैं, उनका भी आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन कहां पर क्या था। एक मैच वाला कॉलम्स आपको मैच करने थे। कॉलम ए जो था, लिस्ट 1 जो था, उसमें ट्रिप्सिन था, मॉर्फिन था, कॉनकैनावेलेंट ए था एंड कोलेजन था। अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, एटलीस्ट ये आइडिया है कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो आपको पता चला ए का थर्ड आएगा, राइट, यानी ए का एंजाइम आएगा, ट्रिप्सिन का एंजाइम आएगा। और A3 के यहां पर 2 ही ऑप्शंस थे, अगर आपके सामने पेपर है गौर से देखिए। A3 के 2 ऑप्शंस थे, फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। उसके बाद चलो दूसरा देख लेते हैं, मुझे अगर पूरा आइडिया नहीं है तो मॉर्फिन अल्कलॉइड ड्रग है, मॉर्फिन जो है वो अल्कलॉइड ड्रग है, वो भी मुझे पता है, तो इसका मतलब B का 4 आएगा। सो अगर A3 और B4 को देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि कोलेजन जो है वो भी आपको पता है इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है कनेक्टिव टिश्यूज में। ओके ना, उसके बाद अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना, हाँ यस, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। Insertion of foreign DNA at BMH1 site in an E. coli cloning vector PBR322 results in the loss of antibiotic resistance gene towards या resistance towards। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपके पास PBR322 है, जो आपको पता है कि एक सिंथेटिक एक जिसको बोलेंगे प्लाज्मिड था, और ये इसका था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एरिया या जीन, और ये था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। बेटा ये आपसे कह रहा है कि BMH1 पे मैंने इसको कट किया और वहां पर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो BMH1 जो है वो यहां होता है। तो अगर आपने यहां पे काटा, इसका मतलब बेटा ये जो है ये कौन सी वाली रेजिस्टेंस को लॉस करेगा? ऑब्वियसली जो वाला जीन आपने डैमेज कर लिया बाय कटिंग इट। ओके, सो मैंने कहा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहां से यहां तक है, इसी जगह पर एक जगह है रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और अगर आपने यहां पे काटा तो आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को डैमेज किया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इस PBR322 की लॉस हो जाएगी। ओके, एक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 6th म्यूटेंट कोडॉन। ये अभी तक दूसरी बार आ गया, यानी एक ही पेपर में एक ही चीज के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। सिकल सेल एनीमिया के बारे में डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन है 6th म्यूटेंट कोडॉन। जो कोडॉन्स थे, आप लोगों ने कोडॉन्स देखे हैं, वो सिकल सेल एनीमिया के लिए, बीटा हीमोग्लोबिन चेन के लिए, और वहां पर जो 6th कोडॉन था वो आपको मालूम है कि GAG हुआ करता था, लेकिन अगर ये रिप्लेस हो गया तो रिप्लेस होने के बाद ये रिप्लेस GUG बन जाएगा। क्या बन जाएगा? GUG बन जाएगा। सो रिप्लेस्ड जो ट्रिपलेट कोडॉन बनेगा, वो GAG के बजाय GUG बनेगा। GAG was coding for the glutamic acid but GUG codes for valine, तभी तो गड़बड़ हो गई। ओके, नाउ इसका मतलब यहां पर GUG आएगा।
ये पूछ रहा है सिक्स्थ म्यूटेंट कोडॉन, नॉट नॉर्मल कोडॉन। सिक्स्थ कोडॉन मुझे पता है जीएजी है, सिक्स्थ म्यूटेंट का मतलब जब ये म्यूटेट हो जाएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, राइट। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीआईएफटी। जीआईएफटी कब करते हैं? जीआईएफटी का मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर और ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ इनफर्टाइल। जब नाम ही है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब तो काहे का यूट्रस? नाउ फॉर एग्जांपल इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड द सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। यानी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उसमें एग्स नहीं बन रहे, बाकी सब ठीक है, बाकी सब चंगासी। तो आप क्या करोगे, आप एक डोनर से एग लाओगे, उसके फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कराओगे, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी दो मैंने क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि ये बोल रहा है अर्ली एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर्स। अर्ली एम्ब्रियो विद 8, अर्ली एम्ब्रियो काहे का? जब है ही गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, आप गैमीट ट्रांसफर कर रहे हो तो ये कहां से लाएगा? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है जो इवोल्यूशन से डायरेक्टली पूछा गया है। यहां पर भी आप अगर आप सिक्स सेंस के साथ जाएंगे या अगर आप प्रॉपरली जो जिसको बोलेंगे ना आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर्स पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज स्किल्स, राइट। ब्रेन एंड लैंग्वेज स्किल्स भी साथ साथ में इवॉल्व होती गई जब ह्यूमन इवॉल्व होता गया। ऐसा द इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज इन द सीक्वेंस ऑफ द अपीयरेंस। बस आपको सीक्वेंस बताना है, आपने पढ़ा है रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो यहां पर आपको बस सीक्वेंस बताना है। पहला क्या है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर रामापैथिकस। रामापैथिकस कैन नॉट बी द सेकंड और थर्ड, रामापैथिकस यहां पहले आना चाहिए होमो हैबिलिस से पहले। इसका मतलब रामापैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेanderthalensis एंड होमो सेपियंस। दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे में क्या हुआ? होमो सेपियंस, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है? होमो सेपियंस पहले लगाया, रामापैथिकस बाद में, तो दूसरा हो नहीं सकता। और चौथे में भी नेanderthals पहले लगाया, रामापैथिकस बाद में, हो ही नहीं सकता। होमिनिड से पहले रामापैथिकस आया था, तो रामापैथिकस कैन नॉट बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब आंखें बंद करके होमो हैबिलिस के बाद नहीं आएगा, रामापैथिकस पहले आएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ डेवलपमेंट के हिसाब से फीटल मूवमेंट स्टार्ट एंड, देखो आपके पास दो लिस्ट है। अगर आप क्वेश्चन 141 पढ़ रहे हो, जो सीरीज मेरे पास है, अगर आपके पास है, दूसरों में ये सीरीज में कहीं और होगा, दाएं बाएं ये क्वेश्चन आगे पीछे होगा, लेकिन क्वेश्चन यही है। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको दिया गया है डेवलपमेंटल स्टेज, राइट। आपको बताया गया है ए फीटस मूवमेंट या फीटल मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हियर अपीयर्स ऑन द हेड। कब होता है भाई? 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। और उसके बाद आपको बताया गया फीटल, क्योंकि आपको मालूम है कि हियर्स डेवलप होना और फीटल मूवमेंट होना ये लगभग 5th मंथ के बाद होता है, दैट इज 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। उसके 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, आई एम सॉरी। द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, ये कब होता है? शाबाश, ये होता है 8 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। सो आपको दो पता चल गए। लास्ट भी आपको पता है फीटल बॉडी इज या फीटस बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स एंड सेपरेट, आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड। ये कब होता है? ये तो लास्ट डेवलपमेंट है। इसका मतलब 24 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। इसका मतलब आपको 3 का आइडिया मिल गया। चौथा जो है वो आपको खुद ही मिल जाएगा, फीटस ऑफ डेवलपमेंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो तो पता चल ही गया। यानी इसका मतलब 3 के बारे में अगर आपको आइडिया है, चौथा आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये भी कुछ ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, यहां मैं रुकना चाहूंगा। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। एनिमल किंगडम से यूजुअली ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं आते थे, यहां इनको पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने आपको थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन दिया। ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स प्रोक्योर्ड सम फिश लाइक एनिमल, फिश लाइक है, मछली लग रहा है, तो क्या है? एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड। इसमें ये कैरेक्टर्स थे। सबसे पहले एंडोस्केलेटन वाज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब कौन कौन कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाला होता है? लैम्प्रीज होते हैं, हैग फिशेस होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ? एक्टोपैरासाइट है ये। जबकि आपको पता है एक्टोपैरासाइट एज दे वर फाउंड अटैच्ड ऑन द फिश स्किन विद देयर सर्कुलर सकिंग माउथ। सर्कुलर सकिंग माउथ कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द कार्टिलेजिनस फिशेस। इसका मतलब ये फिश लाइक तो है मगर फिश नहीं है, क्योंकि फिश होती तो बेटा ये पाइसेस होती तो इसमें अपर जॉ लोअर जॉ होती, ये नथोस्टोमेटा होती। मगर जब ये बोल रही है सर्कुलर सकिंग माउथ, दैट मींस ये क्या है? ये एग्नेथा है। तो इसका मतलब ये एग्नेथा है, तो आंखें बंद करके मैं बताऊंगा कि ये क्या होना
चाहिए, मगर चलो फिर भी सी पार्ट तो पढ़ लेंगे। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पियर्ड फिन्स आर एब्सेंट, स्केल्स आर एब्सेंट, बट 7 पेयर्स ऑफ द गिल स्लिट्स वर प्रेजेंट। बेटा ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये आपको लैम्प्रीज में मिलेंगे। लैम्प्री का साइंटिफिक नेम पेट्रोमाइजन है, स्कॉल्डोन तो हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, वो कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन रखती है, कार्टिलेजनस फिश है, बट उसके पास सर्कुलर सकिंग माउथ नहीं होता है। ओके, ब्रैंकियोस्टोमा भी नहीं है, एक्सोसीटस भी नहीं है। ओके, नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन था जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप where the mother and father both are heterozygous for the A and B blood groups? देखो, मां heterozygous है for blood group A, फॉर एग्जाम्पल अगर मां heterozygous है फॉर ब्लड ग्रुप A, इसका मतलब इसका जीनोटाइप होगा IAIO। बाप भी heterozygous है मगर फॉर द ब्लड ग्रुप B, इसका मतलब IBIO। बनाओ इनके गैमीट्स, जब ये गैमीट बनाएगी और ये गैमीट बनाएगा, ये गैमीट बनाएगी दो तरह का, पहला ये वाला जिसमें IO होगा, फिर IA वाला, ये गैमीट बनाएगा IB वाला और IO वाला, चार तरह के कॉम्बिनेशन, राइट, चार तरह के गैमीट बनेंगे टोटल। तो फिर जब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, जैसे ये आपस में क्रॉस कर लेंगे, अगर IO एंड IB आपस में क्रॉस किया, यानी अगर फीटस में ये कॉम्बिनेशन आ गया, ब्लड ग्रुप विल बी B, हेटेरोजाइगस B। अगर ये वाला गैमीट इसे फर्टिलाइज करेगा, इट विल बी IO, ब्लड ग्रुप विल बी O। अगर ये वाला गैमीट यहां फर्टिलाइज हो गया तो कॉम्बिनेशन विल बी IB, ब्लड ग्रुप विल बी B। अगर यहां पर सॉरी ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज करेगा IA, इसका मतलब ब्लड ग्रुप विल बी A। सो ब्लड ग्रुप विल बी A, ब्लड ग्रुप विल बी B, ब्लड ग्रुप विल बी O। सो ऑब्वियसली 25% चांसेस होगा, जल्दी जल्दी में पता नहीं मैं क्रॉस किया सही, ओके, लेकिन 25% चांसेस होगा 4 out of 1 children can have the particular blood group O, 25% chances। उसके बाद अगर हम देखेंगे, arrange the following events occurring in the renin angiotensin mechanism, ये भी दो बार आया है ये क्वेश्चन, इसी पेपर में दो बार आया है डिफरेंट तरीके से। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, रास सिस्टम, उसके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि आपको सीक्वेंस बताना है, पहले क्या होगा फिर क्या होगा। बेटा सबसे पहले इसने लिखा इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तब तो ये एक्टिवेट होगा नहीं। ये कब होता है एक्टिवेट? जब ड्रॉप हो जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन, ये भी नहीं आएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये भी बात की बात है। फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब डाउन हो जाएगी तब होगा रेनिन जो है रिलीज। जब रेनिन रिलीज होगा दैट इज द सेगमेंट E। ओके, पहले क्या होगा? पहले C, उसके बाद E, और उसके बाद क्या होगा? ये फॉर एग्जांपल रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन इनटू द एंजियोटेंसिन 1। ओके, सो फॉलोड बाय द एंजियोटेंसिन सेकंड, राइट। रेनिन इसको कन्वर्ट करेगा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। ओके, नाउ उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि इसकी वजह से बाकी सारी चीजें जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा बाय एंजियोटेंसिन सेकंड एंड रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन। फिर एल्डोस्टेरोन काम करेगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन का, एंड उसके बाद जो इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर का और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। तो ये अगर आपको पता है CEDBA जो लास्ट वाला है वो इसका सही आंसर है, राइट। ओके, सो इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं यहां पे पढ़ना चाहूंगा। देखो यहां पर जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली पूछा गया है, मुझे लगता है कि ये सेल का बड़ा बेसिक ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन 9th के बच्चे को आएगा। कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गन होता है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दोनों में प्रेजेंट, राइबोसोम है, विदाउट एनी डिस्कशन। तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप सोचोगे ही नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन जो आपको एनिमल किंगडम से मिलता है, फ्लाइटलेस बर्ड विद 4 limbs modified as paddle-like structures suited for swimming। फ्लाइटलेस बर्ड है मगर स्विमिंग के लिए इसके पास क्या है? पैडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, और आपको मालूम है ऐसा कौन एनिमल है? ऐसा आपके पास है पेंगुइन, और पेंगुइन का साइंटिफिक नेम क्या है? एप्टिनोडाइट्स। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़े मुझे एक भी नहीं लगा ऐसा जो आपसे हो नहीं पाएगा। ओके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं पढ़ना चाहता था लेकिन आपके बॉटनी सर ने उनको डिस्कस किया, तो दैट इज ओके। इन अ पॉपुलेशन ऑफ ग्रॉसहोपर स्पीशीज, वेरी गुड। यहां पर जो है ग्रॉसहोपर स्पीशीज में क्या होता है? XX टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन, याद है ना? इसका मतलब फीमेल में XX 2 क्रोमोसोम्स होंगे तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 24 होगा।
12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसके बाद जो मेल होगा उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा उसमें, लेकिन एक मिसिंग है, एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, 23 विल बी द नंबर ऑफ द पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ मेल। इसका मतलब अगर यहां पर आपको 23 एंड 24 रेस्पेक्टिवली बोलना है, 23 विल बी इन द मेल्स, 24 विल बी इन द फीमेल्स, तो इसका मतलब मेल एंड फीमेल, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहां इशारा हो रहा है कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी आपके लिए डिस्कस करना है। ये पेपर डिस्कशन है, वन बाय वन क्वेश्चन ये जो है सॉल्व नहीं करना है अभी। ओके, सो अब फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी काउंट जब आपको बताया जाएगा तो आपको मालूम है कि उसमें इओसिनोफिल लिम्फोसाइट्स आपको बताया गया, एक इंसान के जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है। आपको बताना इसमें इओसिनोफिल्स कितनी है, 2 to 3%, उसमें लिम्फोसाइट्स कितनी है, 20 to 25%, तो निकाल दो। पहला ही ऑप्शन है 160 to 240 पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड अगर लिम्फोसाइट्स को देखें 1600 to 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट, ये वाला ऑप्शन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दैट इज टेटनी है, आर्थराइटिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। टेटनी क्या है ये आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल ड्यू टू द कैल्शियम, आई कैन से लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। और उसके बाद आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, राइट, सॉरी इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स है। ओके, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अच्छा, अरेंज द लेयर्स, सेल लेयर, बेटा अगर आपने सिंपल इतना किया है ना, अगर आपने सिर्फ ये जो एग का अगर आपने स्ट्रक्चर ही देखा है बस, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अरेंज द लेयर्स वन बाय वन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर कौन है, पहले बाहर कौन होगा, कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर से कौन होगा, ज़ोना पेलुस्ट्रा, उसके अंदर से कौन होगा, पेरिवाइटल स्पेस होगा, उसके अंदर कौन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम होगा। इसका मतलब ये चीज भी हो गई आपसे। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके बहुत ही इजीली हो सकते थे, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिमल किंगडम से, एनिमल किंगडम को जिसको आप छोड़ देते हो अक्सर, जिसको अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि बाद में देख लेंगे, ओके चार्ट वार्ट से वगैरह से कर लेंगे, ओके एनिमोनिक वगैरह से कर लेंगे, नहीं होगा भैया, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है वहां पर आपको देखना पड़ेगा वन बाय वन ऑल द कैरेक्टर्स। Human skull is monocondylic, joint between two, अच्छा statements are correct with reference to human endoskeleton। ये स्केलेटल सिस्टम से है, सॉरी मेरा क्वेश्चन ओवरसाइट हो गया, कहीं और था मैं। ओके, यहाँ पर ठीक है, अभी यही क्वेश्चन कर लेंगे। ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टेब्रेज, कार्टिलेजिनस joint. In human beings the number of cervical vertebrae is 7. Okay, all the ribs except the last two pairs are bicephalic. Okay, occipital bone of the skull is articulated with the atlas vertebra. Okay, बहुत ही बेसिक है, स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, दैट्स ऑल, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको देखते ही आपसे सॉल्व हो जाते अगर आप प्रॉपरली पढ़ के गए थे। यानी इसका मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे आज का पेपर जो था, इट वॉज कंप्लीटली, जिसको बोलेंगे रीचेबल, इट वॉज नॉट द पर्टिकुलर थिंग विच वॉज नॉट रीचेबल एट ऑल। लेकिन इसमें यही चीज थी कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम लगता कुछ क्वेश्चंस को करने में, जो कॉलम वाइज क्वेश्चंस होते हैं उसको करने में कम टाइम लगता है, जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ना होता है, और कहां पर आप गलती करते हो सबसे ज्यादा आपकी गलती होती है आप जहां पढ़ते हो फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज, वो होता है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। सो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आपको देखा, आपने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो वहां पर क्वेश्चन जो है उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इससे पहले कि इस पे डिटेल्ड एक जिसको बोलेंगे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वन बाय वन आपके लिए, तब तक आप अपना ख्याल रखें। एंड ओवर टू फिजिक्स सर और एंड केमिस्ट्री सर, थैंक यू।
एक से बैठ के नहीं माइक क्विक एक कितना से यार that's of course exactly moet ke maar gas it's not course you can catch Assalamu alaikum dear students. Now me and Mr. Zahid Yasin sir will be having an interaction of the chemistry paper. We will be discussing the physical, inorganic and organic part. Zahid sir will be discussing the physical part, and inorganic part I will be discussing organic part as well as inorganic. Sir, we will go side by side. You take questions from inorganic, I will take simultaneously, I will take a question from physical. So question starts from 46 question. 46 question. Okay, sir, start here. We will be discussing side by side. Some of the questions will be discussed by Zahid sir, and some of the questions will be discussed by me. We have question 46. We have match list first with list second, and this question belongs to the coordination chemistry. And in that we have a complex ion of platinum with chlorine and ammonia as ligands. Now on the other side, list second, that is given what's the shape oblique geometry. Now we have to actually, it's the matrix match type. So part A we have a complex of platinum, chlorine, ammonia. In the second we have cobalt, ammonia, hexamine, and then we have nickel tetrachloride, and it's the complex of the iron, part D. Now we have to match the geometries. Now in that case, platinum actually forms the square planar complexes, most once we observe the geometries. Cobalt forms the octahedral geometries, nickel forms the tetrahedral geometries, and iron forms trigonal bipyramidal. Now if we try to match it, then the matching goes as A is third, B is the octahedral, that's first, then nickel complex is a square planar, and D is trigonal bipyramidal, that's D is the second. So this goes as option number third. Option third is the answer. Now we have the next question. Question number 47. It's from electrochemistry. We have to calculate the potential. It is half cell. Half cell is like we have given platinum. Question number 47. It is platinum solid. We have hydrogen gas to atmosphere, and we have in HCl, its concentration is 0.02. It's half cell. We use Nernst equation directly for calculation. So we can calculate it by reduction potential. We can calculate it by E H positive to H2 equal to E naught H positive to H2 minus there are some constants as already given in question. The constants is equivalent to 0.0591, and the number of electron transferred, that is 2. If we write here reaction, it should be like this: twice H positive plus 2 electrons gives H2. 0.0591 log. This is gas. Write out this concentration first, but then we have to take this positive side. If we write H positive first, concentration of H positive is 2 into 10 to the power minus 2 square as per this equation, and we have hydrogen concentration here. We can write pressure here. So after substituting, this is equivalent to 0.
By giving this calculation, hydrogen ion pressure is given there 2 atmosphere. After calculating, your answer will be H positive divided by H2. When you calculate by putting all the values in the equation, it comes minus 0.109 volt. So the option first is actually the Option first. correct A. option. Option first. Next. Next is Next, question number 48. It is from equilibrium. It is from equilibrium. We have buffer. Buffer is between x negative and hx. We have to calculate its pH. Kb is given. Kb is given 10 raised power minus 4. But यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना था कि ये एसिडिक बफर है, लेकिन इसमें -10 okay, it is 10 raised power -10. It is 10 raised power minus 10. It is acidic buffer. So we have an equation pH is equivalent to pK minus log x negative concentration divided by hx. The concentration of x negative as it is given, the concentration, it contains equal concentrations of this. That means this and this is same. If this is same, then this becomes 1. Log 1 is equal to 0. That pH is equivalent to pKa. But it is not given here pKa. We have given kb. If kb is 10 raised power minus 10, what will be pKb? pKb is minus log 10 to the power minus 10. That is equivalent to 10. So we have a relationship. 14 pKa can be calculated as 14 minus pKb. So that is 14 minus 10. That is equivalent to 4. So pKa is 4. So pH is 4. So the option second. Option second. After that, question number 49. Again from equilibrium. Very simple question. This one is simple. You have to find out 4 options are there in which Kp is not equivalent to Kc. This equation satisfies this condition. Nitrogen gas, hydrogen gas gives twice ammonia. Here are 2 moles, here are 4 moles of gas. Obviously this and this side is different, so obviously Kp is not equivalent to Kc. This is option number 3rd again. Here. So option number is the answer. Note down option number 3rd. Now we have question number 50 as per this series, but you can match the questions. After that you will get the answers. We have a reaction, it's given as graphical reaction. There is time and here it is concentration of reactant. It's from kinetics. K is given, K is equivalent to minus slope. What we have to calculate? The order of reaction. Very simple, we know that for zero order reaction, we have K is equivalent to R naught, that is initial concentration, minus the concentration at time t. If we rearrange this equation, I can write it Kt R naught minus R. Put R this side because this is our y-axis. R naught minus Kt. Obviously, now we plot R versus T. This is a graph, but slope should be minus K. That is, slope is minus K. That is decreasing slope. So it follows this zero order. So our answer is option number 4. That is zero order. The reaction is zero order actually. Option number 4. That is zero order. It is a zero order reaction. After that, we have a question from thermodynamics, question number 51. We have equation 2a. I suggest don't use ChatGPT or any other AI tool for these calculation types of, they mostly give wrong answers. 2a, B gas gives 2D gas. This is our reaction. All are gaseous. We have given internal energy delta U minus 10 kilojoule per mole. We have given their entropy, standard entropy change, that is equivalent to minus 44 joule per Kelvin. We have temperature is equivalent to 298. Okay.
So first we have an equation. We have to calculate delta G. We need to calculate delta G. But for delta G, we have an equation delta G is equivalent to delta H minus T delta S. We don't have delta H. We have delta U. But we can calculate delta H is equivalent to delta U plus delta Ng RT. By applying, this is minus 10 plus delta N, number of moles. Here we have 2 moles, here we have 3 moles. So change will be minus 1. Minus 1. R, gas constant, that we will put 8.314 into temperature 298. But one thing we have to take here, we have to divide it by 1000 because it is in kilojoules, this is in joules. So this becomes roundabout, this will make up roundabout minus 12 something it will make up. After that, when you have delta H, this is delta H. You calculate, put this delta H in this equation. You have temperature 298. You have given entropy. Entropy is given there. All the parameters are given. You will find its final answer comes delta G equivalent to nearly. It will not become exactly like this 0.0635 somewhere like nearer to this option. That is, this process is non-spontaneous. So it is option number 1. So it's option first plus sign. So this will be non-spontaneous process. Option 1. After that, we have again another question from kinetics. We have another question from kinetics, that is question 52. We have given here equation ln k is equivalent to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 divided by t. This is here given. This is from the Arrhenius equation. This question belongs. Because we have similar equation, that is ln k is equivalent to ln a minus ea divided by r t. When we equate these two equations, so similar here, ea by r is equivalent to 1.25 into 10 to the power 4. EA is equivalent to 1.25 into 10 to the power 4, and R in calories, because answer is in kilocalories. So R 1.98 calorie, 1.98. When we calculate this, this will come in 24.84 kilocalories per mole. So it's option number 4. Now I have the next question. We have to select. Now the next one is select a reagent that reduces nitriles to primary amines. Nitriles, you know, this is C triple bond N, and you have to get CH2 NH2 upon reduction. So we have to add actually the hydrogen, you know that. So I will directly come to the answers. One is that you know that it's discussed in the chapter of the amines in the text. So one is lithium aluminum hydride. So we can use lithium aluminum hydride. Second is it has used, actually the next option is tin HCl, but tin HCl is actually that converts CN group into the aldehyde group. So that's not the case here, because we have to convert cyanides, nitriles actually to amines. So the next is H2. The next option is H2 in presence of the nickel. So this acts as a strong reducing agent as well. And the last one, that's D option, D, that is we can use sodium amalgam, Hg, that is the actually the liquid part of the sodium, which is amalgam formation that occurs in presence of C2H5OH, which is also called as the Mandel's reduction. So these three reagents are actually causing nitriles to get converted into the amines. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन देखेंगे तो A is correct. No, A in the sense A, we say this is A, then it's C, and then it's D. ठीक? Option number 3rd. Option number 3rd is the answer. Option 3rd. 3rd is the answer.
The correct statement with regard to the secondary structure of DNA and RNAs, I think that most of the students might be knowing this. This comes from the biology itself as well. This is the option first is the answer. DNA possesses a double-stranded helix structure and contains thymine as one of the 4 bases. We must be knowing all of these. During the Lessons test, the element present in an organic compound are converted to. Okay, mostly most of you know that basically the organic compounds are present as the covalent compounds, and once we carry the Lessons test, we convert actually into the sodium extract of that, in which a compound gets converted from covalent to ionic. So option second is the answer, covalent form to ionic form. Now the next question belongs to the physical chemistry, so Zahid sir must be discussing. So we have question number 56. It is a mixture of acetone and chloroform that forms a negative deviation. It is given already in question that it forms a negative deviation. Negative deviation in chloroform, that is CHCl3, and acetone. We have acetone CH3 C double bond O CH3. So obviously they have negative deviation already given in question. Cl, 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 H. So obviously this will be more positive, and C double bond O CH3 CH3 negative. Chances of hydrogen bonding, so the interaction will be the stronger. So it is question number 2. Option number 2. Formation of hydrogen bond between acetone and chloroform that makes this combination strong, and this leads to the negative deviation. So we have option 2. Correct option second. So option second is the answer. Then the next question is that in a test tube containing a salt, we have a test tube in which we have a salt. Salt, you know that it contains positive and the negative, that's cation and anionic part we have. So we have a salt here. Now few drops of dilute H2SO4 is added. तो यहाँ पे हम H2SO4 इसको ऐड करेंगे, which gives colorless vapor having a smell of vinegar. Vinegar, you know that we have using that acetic acid. The vapor stirred the blue litmus paper red. Identify the correct ion from the following. ठीक है, तो करेक्ट आयन कौन सा हो सकता है? It must be directly the acetate ion CH3COO negative inside, because once this will be present, it will take directly, it will act as a base, so it will take directly H positive from the sulfuric acid and it will get converted into what we say as an acetic acid, and after getting converted into acetic acid, it will turn blue litmus to red. Next question is from the chemical bonding. We have ClF3 as a molecule. So I have ClF3 as a molecule. Forms identify the correct statement about ClF3 from the following option. ठीक है, तो अगर हम ClF3 की बात करेंगे तो ClF3, you know that we have the lone pairs. We have actually 2 lone pairs. I will write them as 2 lone pairs which are present in the equatorial position, and one more F is also present in the equatorial position. These are equatorial positions, and we have 1 fluorine that's present at the axial positions. Axial position, these are the axial positions, and after observing the geometry, so we have a T-shaped. If you look at this, this looks as, so we have a T-shaped geometry. Now the question is as, we have 2 lone pairs and 3 bond pairs. It has Option second. Option second is the answer. It has T-shaped geometry with 2 lone pairs. With 2 lone pairs on Cl atom. ठीक है, तो पहला अगर आप देखेंगे, it has T-shaped geometry with 3 lone pairs. That's not the correct answer. So it has T-shaped geometry with 2 lone pairs. Thank you. Now again, question number 56. List first 59. And list 59. List first and list second. We have a complex, so we have a list
first and here it's list second. So I will match the two. The first case is that we have a platinum complex. So we have platinum NH3 whole twice and Cl2. आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास NH3 और Cl2 है, ठीक है, तो दो लिगेंड्स डिफरेंट है, यानी NH3 डिफरेंट लिगेंड्स है, Cl डिफरेंट लिगेंड्स है, तो ये दिस acts as a criteria for the geometrical isomerism. So this shows GI, geometrical isomerism. उसके बाद हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है विथ EN. तो दिस EN हमारे पास आपको पता है दिस asymmetrical ligand. So this has a criteria for the optical isomerism. So it shows optical isomerism. And the next one is cobalt NH3 whole 5 NO2 and Cl2. You know that this is actually an ambidentate ligand. So ambidentate ligands जो है वो linkage isomerism दिखाते हैं. So we have linkage isomerism. So Zahid sir has already made the options. This is A third, B one, C fourth, D second, D second, D second. This is option number third. Option third is the answer. Next also belongs to what we say as a organic chemistry. The number of chlorine atoms present in an organic compound. We have one like benzene, like this, and we are using 6 Cl2 in presence of anhydrous AlCl3, dark, ठीक है, तो यहाँ पे हमें X देखना है. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे we are using UV light, thrice Cl2, and we are using UV light 500 kelvins पे. You are getting Y here. The number of chlorine atoms present in the organic compound X and Y are the following reactions. ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ये टेक्स्ट में दी गई है. The answer is 6 because it will break the pi bonds and there will be the 6 chlorine that will get added. इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटर्स. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो देन इट शुड बी 3 and 6. So 3 and 6 should be the answer. So option number 4. Option number 4. Now the next question is 61 question. Identify the incorrect statement from the following. This is from the inorganic chemistry and that too from the P block. Nitrogen chemical. This has phosphorus, arsenic and antimony shows catenation property. They have catenation property. They can show, especially the phosphorus shows. We have to find the incorrect statement. So the next is also right. And the third one, which is actually the incorrect, that is nitrogen can form d pi p pi bond with oxygen, which is not there. Because in most of the compounds of nitrogen with oxygen, we have double bonds. And it's actually p pi bond. It's not p pi d pi. So that's actually the wrong statement that's given here. So nitrogen forms d pi p pi bond with oxygen is actually a wrong answer. Wrong Option number 3rd. Option number 3rd. Now the next from the physical chemistry. So we have here, it is from thermodynamics. 500 joule of, we have a system. 500 joule of energy, heat is given to the system, that Q, and work done by the system, that is 200 joules. Okay, so we have simple first law of thermodynamics, that is we have to find out the change in internal energy, that is delta U Q plus W. Delta U Q is plus 700 because plus 500 because heat is given to the system, 500 absorbed by the system, so it is plus. Work done by the system, that is minus. Work done by the system, we can write like this, plus we have minus 200. So this will come 300 plus 300. So this is option number 3rd. Option 3. The next is from the organic chemistry, question number 63. Compound P, we have C8. We have C8H8O.
gives a red orange precipitate with, ठीक है, red orange precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine. This is 2,4-dinitrophenylhydrazine. We have like this NH2, then it's 2,4, it's 2, then it's 4 like this, 2,4-DNP. Now you know that 2,4-DNP actually reacts with the carbonyl compounds, that's two aldehydes and ketones, so it must be an aldehyde or ketone, ठीक है, क्योंकि aldehydes ketones इसके साथ react करते हैं. It does not reduces Phalanx reagent. Now you know that Phalanx reagent को reduce कौन नहीं करता है? हमारे पास अगर aromatic aldehydes होंगे, aromatic aldehydes, तो ये इसको reduce नहीं करते हैं, ठीक है. उसके बाद बोलता है on drastic oxidation with chromic acid. You know that chromic acid is actually H2CrO4, which is quite similar to the sulfuric acid, which is a very strong acid. P gives aromatic product Q that produces effervescence on treating with NaHCO3. You know that NaHCO3 हमारे पास जो टेस्ट देता है, it's not the phenol which gives, it's the carboxylic acid that gives. So the next compound must be a carboxylic acid. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से it is हमारे पास एक तो aromatic aldehyde है, एक तो ये है C double bond OH, क्योंकि ये Phalanx टेस्ट नहीं देता है, and there are 8 carbons, so there must be the methyl group. और इसको अगर हम ट्रीट करेंगे फिर H2CO3 के साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, H2CrO4 के साथ, तो ये हमारे पास ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे. तो उस हिसाब से इट्स द ऑप्शन फर्स्ट, व्हिच इज ऑप्शन ए. 64 is a very simple question from the IUPAC system. So we have a compound like this CH3, then it's CH2, then it's CH2, CH3, then we have CH2, then we have CH3, then it's CH2, CH3. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो we are getting substituents at the equidistant positions. यहाँ से 1 2 3 है, यहाँ से भी 1 2 3 है, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लेते हैं. तो दिस गोज लाइक दिस 4 5 6 and 7. So it's 3 ethyl, so we have 3 ethyl, then it's 5 methyl, then you can write it as heptane. Option 1. So it's the option first, which is the correct option. Option 1. So the next question comes from it's a conversion based. So we have like this CH3, CH2, CH2, OH, and it's treated with PCl5. Okay, PCl5. अब PCl5 क्या करता है, वो दो क्लोरीन्स देता है, एक इसके साथ कमाइन होता है, एक इसके साथ कमाइन होता है, तो ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है. तो यहाँ पे आपको बोलना है, एक तो ये बनेगा आपको CH3, CH2, CH2Cl, ठीक है, तो प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा POCl3 प्लस बनेगा जनाब HCl. तो पहला हमारे पास आता है X इज एक्चुअली POCl3, ठीक है, दिस इज X. उसके बाद हम अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. अल्कोहलिक KOH क्या करता है, वो एलिमिनेशन करेगा, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. उसके बाद हमारे पास HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हम देते हैं, सो वी हैव HBr इन पेरोक्साइड. तो जब हम HBr इन पेरोक्साइड देते हैं तो उस केस में क्या होता है, एंटी एम रूल यूज होता है. तो आपको प्रोडक्ट जो है CH3 CH, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे CH2Br आएगा, तो that's the product that's formed. So we have option second. So option second is the answer. ठीक है. So next question is of the physical chemistry. We have question number 66 here. We have carbon dioxide gas. It is passed on coke, hot coke, that is carbon, solid. This one is gas. So it will form, obviously, this will form equilibrium. In equilibrium, it forms carbon monoxide gas. On balancing, we will show it like this. It is also gas.
So what we have to initially at time 0, when time is 0, this is carbon dioxide composition is 1 dm cube, 1 decimeter cube, and these all are 0 at time 0. After some time, when equilibrium attains, we have a mixture, we have carbon dioxide, we have carbon monoxide as well. Let x part of this will be decomposed, so it will remain after some time t, it will remain 1 minus x, and how much it will form? 2x. Then we have to total volume at equilibrium is 1.4, so sum of this is 1.4, so 1 minus x plus 2x is equivalent to 1.4. okay, now what we will do, it will remain 1 minus x plus 2x, it will remain only 1 plus x, that is 1.4. So x is equivalent to 1.4 minus 1, that will become 0.4. So our x is 0.4. Then how much CO2 it will be? This is 1 minus x. So 1 minus 0.4, that it is 0.6. And how much CO will be? That is equivalent to 2x. 2 into 0.4, that is equivalent to 0.8. So it is option number 4. Option number 4, it is given there, 0.8 dm cube of CO and 0.6 dm cube of carbon dioxide. Next question, we have question number 67 here. It is oxygen O and like this. So here it is lone pairs, here this one and this. So obviously it is minus, it is plus, and here neutral charge, this will be 0. Here in question it is labeled as oxygen second, this is oxygen first, and this is oxygen third. So oxygen second poses 0 charge, oxygen first positive plus 1 charge, and oxygen third minus 1 charge. So it is our option number 4. Option 4th. Now we have question from kinetics. We have to match 0 order. What is the rate constant unit for 0 order reaction? For 0 order, we have simply mole per liter per second. For first order, second inverse. Second inverse. For second order, we have mole minus 1 liter second inverse. Third order, we have mole minus 2 liter square second inverse. So this is our option number 68. We have option number B. Option B. Option B. After that, we have question number 69. We have sodium, beryllium, we have phosphorus, magnesium, and silicon. We have to find out the increasing order of metallic character. We know that we have S block elements, they are highly metallic. So this is metallic, this one is metallic, and down the group metallic character increases. So at the top we have highest metallic order sodium, then we have magnesium, then beryllium. Oh, these are metalloids, this silicon, and we have phosphorus. This is almost non-metal. So this will be the order of metallic character. So it follows option number what? Option number, we have option number third. Option third. Option third. After that, we have mole concept. Question number 70. What we have given? 5.4 grams of urea. Urea. This is formula for urea, NH2CO NH2. In one molecule of urea, there are 4 hydrogens. So we have to calculate the number of hydrogen atoms. So number of hydrogen atoms. Simply weight, given weight, divided by molar mass, multiply by Avogadro number,
multiply by atomicity, number of hydrogen atoms in one molecule. Number of hydrogen atoms in one molecule. So you will go by 5.4 divided by molecular mass of urea 60. is 60 given there. Avogadro number, right here 6 into 10 to the power 23. Number of Multiplied by hydrogen 4. atoms, that is 4, you can calculate. So option will come. Option number, we have 70. For 70 it is A, 2.168. 2.168 into 10 to the power 22. Option A. Option A. After that, we have another question from equilibrium. We have Bi, bismuth, OH. It is solid. What it gives? BiO positive. On dissociation, it gives BiO positive. And it gives us Plus OH. aqueous, OH aqueous. What we need to calculate? pH. Its equilibrium is given K 4 into 10 to the power minus Minus 10. 10. We know that solid, we don't take it in equilibrium into account. We take its active concentration, that is unity. If we take its at equilibrium, its concentration X, so equilibrium constant, we know that is BiO positive, OH negative. Okay. So it's K X into X, that is X square. So on solving, X is equivalent to under root K. Under root K is 4 into 10 to the power minus 10. So why after solving, this is X is equivalent to 2 into 10 to the power minus 5. So X is our OH concentration. From this OH concentration, we can calculate POH. POH is our OH minus log OH concentration. Minus log OH negative concentration. So it is minus log 2 into 10 to the power minus 5. So by solving, you can follow from here POH, then you can calculate the pH. How? 14 minus POH. That will come after solving, you will get 4.699. I think so it is basic. It will come 10 roundabout. We can follow it. Yes, because there is an OH concentration. So It will be basic. It will be basic. 9 point something. It will come 9.30 somewhere. You can calculate it. You will get the option 9.301. You will get 9.301. Not this 4 point because it's a basic. Next. Next question is from the organic chemistry. Match list first with list second. So we have a compound like this. We have cumene. So we have CH3, and we need to convert this into OH. That's the phenol. You know that cumene, hydroperoxide and all that is formed. And for this reaction, we actually use oxygen, aerial oxidation. And we have H2O in presence of H positive. So first hydroperoxide is formed, which then rearranges to phenol. So this is the reagent, appropriate reagent. That's first का हमारे पास जो है second option है. उसके बाद second we have CH3COH. हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है. इसको हमें कन्वर्ट करना है CH3CH2OH में. That is, we are carrying the reduction. So we are actually decreasing the number of oxygen atoms, and for that we have the third option, that is यहाँ पे जो हमारे पास है CH3OH. ठीक है, पहले हम इसको असल में एस्टरिफिकेशन करते हैं. We go for the esterification because carboxylic acids CH3OH in presence of H positive में esterification बनते हैं, यानी esters बनते हैं. उसके बाद esters को हम reduce करते हैं H2 in presence of catalyst. अगर हम use करेंगे तो it will get converted into alcohol finally.
ठीक है, तो हमारे पास इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो है बनता है, यानी बी के लिए हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट सी है हमारे पास, सी के लिए CH3 CH2 CH2 OH हमारे पास है, ठीक है, और इसके बाद इसको कन्वर्ट करना हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट करेंगे CH3 CHOH and CH3, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द रीअरेंजमेंट दैट्स कैरीड। तो रीअरेंजमेंट में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन सकता है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, तो उस केस में हमारे पास IV इज द ऑप्शन। और लास्ट में हमारे पास बेंजीन हमारे पास है, इसको हम करेंगे कन्वर्ट इनटू फिनॉल, तो हम यूज कर सकते हैं ओलियम, ठीक है, तो हम ओलियम NaOH यूज कर सकते हैं, यानी अगर हम ऐसे SO3H को हम NaOH यूज करेंगे 2 मोल्स, तो फाइनली यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके यहाँ पे OH आएगा, सो दैट बिकम्स एक्चुअली द ऑप्शन। सो वी हैव एन ऑप्शन, फर्स्ट को हमारे पास जो है यानी ए अगर आपके पास है तो उसको सेकंड आएगा, ठीक है, बी अगर आपके पास है तो उसको थर्ड आएगा, सी अगर आपके पास है तो उसको IV आएगा, ठीक है, और डी को जो हमारे पास है तो फर्स्ट आएगा, ऑप्शन थर्ड। सो इट बिकम्स ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। We have a bulb. We have a bulb, 150 watt bulb, but only 8% of energy it converts into light. Energy it converts into light. So how much light then it gives? So it gives light 150 multiplied by 8 divided by 100. That comes round about 12. So then if energy, this is the energy per second because it's in watts, so it is energy per second, joules per second. We have to find out the number of photons and the energy of one photon is given. So number of photons, total energy, that is 12, divided by the energy of one photon, that is 4.42 into 10 to the power minus 19 joules. So when you solve it round about, it comes 2.71 into 10 to the power 19. So it is option D. So the next question is from the isomerism. We have the next question from isomerism. The pair of the molecules that are metamers among the following is, you know that metamerism is actually shown by the bivalent functional group and the functional group remains same. So the option first is actually the correct option. This is an answer. इसका जो next part बनेगा वो बनेगा ऐसे CH3 CH2 O CH2 CH3। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से देखिए अल्काइल चेन और ये वाली अल्काइल चेन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस साइड, वी हैव अ डिफरेंट अल्काइल चेन्स। When across bivalent functional group you have a different alkyl chains, so we say that it actually shows the metamerism. So option first is actually the correct option. Option first. ठीक है, No doubt, option first. next we have from the physical chemistry. It is from solutions. We have to calculate the molality. We know that the molality WB into 1000 divided by molar mass, molecular mass, and multiply by the weight of solute. So on applying this, we have 2.5 grams of solute. We have molar mass of this is 60. It is given 75. When we calculate this, this comes 0.556. So it is correct. Second, we have molarity. Molarity in WB into 1000. We have molar mass. Here we have volume of solution. Volume of solution. On putting the values, we have here it is 2.5 grams. It is 5 grams. 5 into 1000 divided by 40 into this volume 450. Again, this comes correct as per the option 0.278 molar.
Third option is aquatic species are comfortable in cold water. That is also correct, because when temperature is low, there is more oxygen. More dissolution of gas. More oxygen in water. So aquatic feel comfortable. The solubility of gas increases with decrease in pressure. This is wrong, because Henry law states that solubility increases with increase in pressure. For a binary mixture, XB mole fraction equation, it is wrong, because it is given XB is equal to Na. It should be NB. So A is correct, B is correct, C is correct. So this combination is in option first. Option first. Now the next question is ambidentate ligand. You know that ambidentate ligands are actually the ligands. We have two donating sites, so it's SC and negative. So we have a donating site of the sulfur as well as the nitrogen. So this will be donating. So the answer is thiocyanate. The next is also theoretical question. That's the functional group that can be identified through the phenolphthalein dye test is actually the phenol. Okay? It's the phenol that is actually characterized by the phenolphthalein dye test. Next is very simple. We have match list first with list second. So we have first is one minute. First is we have C2H4. C2H4. So this goes as like this, C2H4. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं. तो total number of sigma bonds is actually 5 sigma bonds and we have 1 pi bond. दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे, we have the compound like this, C triple bond CH. So total number of sigma bonds is 3 sigma bonds and we have 2 pi bonds. The next is that we have methane CH4. So there is no pi bond, but there are 4 sigma bonds. And the next is NH3, which contains actually 3 sigma bonds and 1 lone pair. Everybody must be knowing this. So because of that, the option is we have first is IV. So it becomes the first option, because none of the option is actually carrying IV. So first is the correct answer. Now next is from the Faraday's law. Option first. The next is from the Faraday's law. It's from electrochemistry. So question number 79 here. We have a copper sulfate electrolyzer for 10 minutes. Current 1.5 ampere. Current is given. The mass of copper deposited at cathode. We have so many equations. We can solve it. We have one equation that is W by equivalent weight equivalent to Q divided by F. Q is the charge, F is the Faraday. W Q by Faraday into equivalent weight of copper. Equivalent weight of what? Copper. It is copper 2 positive here because it is copper sulfate. So Q charge I into T. Current, because charge is not given, current is given. Current time Faraday into equivalent weight and of copper. How much current is given here? It is 1.5 ampere. But note down, time is in minutes, so we have to convert. It is in seconds, so we multiply by 60 for conversion. Faraday is 96500 coulombs. Equivalent weight, molecule atomic weight of copper is 63, but we have copper 2 positive here, so we have to divide it by 2. So after solving, we get the weight that is equivalent to 0.293 grams. Option first. Option first. After that, we have a question from atomic structure, that is quantum numbers. We have N2, NL. N is 2, L is 1. So obviously it is 2p. N is 4, L is 0. So it is 4s. 4s. We have N5 and 3. So it is 5f. So we have last